Welcome back, dear students. In this lecture, we will try to understand this defense of intoxication in criminal law under various criminal jurisprudential systems or criminal justice systems, especially India, US, and England, and also particularly in the case of Canada, because last week there was a judgment from the Canada Supreme Court in R versus Sullivan, and that judgment created a havoc within the country there and within the legal luminaries as well. Intoxication actually can be a state which can be reached by means of alcohol or other drugs. ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि alcohol ही हो. And there can be alcohol, use of alcohol or any other drug, or even any food or substance, rather say substance, which has an effect of bringing about intoxication in the mind of the consumer or the user. For example, substance के nature का एक चीज़ होती है जिसे magic mushroom कहते हैं. There are some wild growing mushrooms which have a tendency of bringing alcoholic effect to the consumer. Similarly, certain drugs are of such a nature that they bring alcoholic effect and must be consumed only on certain prescription. और ड्रग्स का भी एक नेचर बड़ा स्ट्रेंज है कि एक अमाउंट तक वो अल्कोहलिक नहीं होते हैं कुछ, और उस अमाउंट से ज़्यादा या क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम करने से उनका इफेक्ट आ जाता है. तो ये सारे substances, let's call them all intoxicating substances, whichever they are. There are two modes in which these substances can be consumed. One is involuntary and another is voluntary. Voluntary भी एक नेचर का हो सकता है जिसमें involuntary वो बन जाए. For example, if a person was prescribed certain drug, or if he consumed certain drug for medication and that resulted into intoxication, the consumption, whether it's voluntary or involuntary, is a question of debate. But if he did not know altogether about the effects of or nature of that drug, it will automatically become involuntary. अब involuntary के भी दो modes हैं, either against will. When there is will, so knowledge becomes immaterial. उस वक्त knowledge उसको हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Against will जब दिया जाएगा तो उसको without knowledge होगा. And then other is against consent. Without knowledge. Against will में एक ऐसा केस भी हो सकता है कि इंसान को नॉलेज है लेकिन he was forced to consume that. And other one, for example, एक पार्टी है और मजाक में एक दोस्तों ने किसी के मिला दिया. There are many cases based on that, and जहाँ दोस्तों ने मजाक करने के लिए खुद से कंज्यूम किया, and a certain person जो नहीं था habitual of consuming that, उसके खाने में मिला दिया या ड्रंक में मिला दिया. And other one is involuntary में जो without knowledge है. तो एक against will हो सकता है by force or by use of threat or duress, and another might be without knowledge. So इन सारे modes को law कैसे address करता है, उसको हम समझने से पहले एक चीज़ समझेंगे offenses के बारे में. Offenses का एक basic nature ये है कि offenses criminal law में जितने भी हैं, they are understood under two major heads. One, where there is liability with presence of mens rea. Mens rea is an essential ingredient of the crime, and another case is the cases of strict liability, where mens rea does not hold good or any ground for liability. तो यहाँ तो
केस अलग हो जाता है। अब इसमें इंसान ड्रंक था नहीं था, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल। और इसमें नेग्लिजेंस के भी केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज फाउंड नेग्लिजेंट ऑफ द कंडक्ट और बिहेवियर, और फिर उसने न्यूसेंस कर दिया या उसने पब्लिक वे को ब्लॉक किया, 289 सेक्शन है आईपीसी का सपोज, या 268 है न्यूसेंस रिलेटेड, उन सारे केसेस में मेंस rea इमटीरियल है। तो अगर नेग्लिजेंट है बाई इन रिलेशन टू combustible substance or explosive or dangerous animal, in all those cases the person is liable irrespective of the fact that whether he was insane or intoxicated. But in case of mens rea, English criminal jurisprudence since the times of R versus Majewski, एक judgment आई, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, R versus Majewski, and आपने एक केस होगा DPP versus Beard। रादर ये DPP versus Beard से ये शुरू हो गया था ये debate that offences actually are to be understood in terms of mens rea under two heads. One is offences of basic intent and offences of specific intent. Specific intent, अब इसको लेमैन ज़बान में हम इस तरह समझते हैं, बेसिक इंटेंट और स्पेसिफिक इंटेंट क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर इंटेंट बेसिक, इसमें डिबेट में जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँ आपको कि मजूस्की में भी लॉर्ड टिप्लॉक एंड अदर्स ट्राई टू डिफाइन दिस, और बहुत उसके बाद जजमेंट्स आई हुई है, बट जितना ज़्यादा इस पर जजेस ने दे अटेम्प्टेड टू डिलिनिएट दिस, उतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। मोस्ट ऑफ द ऑथर्स यू विल फाइंड कि वो कहते हैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, रादर इसने और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि बेसिक इंटेंट और स्पेसिफिक इंटेंट इज़ वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस डिबेट हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जितनी भी मीठी चीज़ें हैं सपोज़, उनका बेस है चीनी या शक्कर, और फिर अब मिसाल के तौर पर रसगुल्ला है, तो हम ये कहेंगे रसगुल्ला वो मिठाई है जिसमें बेसन और शक्कर मिलता है या दूध। तो मिठाई के लिए, मीठे के लिए उसका बेस है शक्कर, और उसको स्पेसिफिकली फॉर एग्ज़ाम्पल वो रसगुल्ला बनाने के लिए बेसन चाहिए, और जलेबी के लिए जो है वो बेसन चाहिए, और सपोज रस मलाई के लिए जो है खोया चाहिए, बट सबको मीठा करने के लिए शक्कर चाहिए। तो एक क्राइम का बेसिक इंटेंट होता है जहाँ से वो अगर उस इंग्रेडिएंट से पहले वो ऑफेंस नहीं कहलाता है, और स्पेसिफिक इंटेंट वो ऑफेंसेस हैं जिन्हें हम, ये मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, आप ऑथर्स ने इस तरह नहीं समझा है, इसको फॉल बैक ऑफेंसेस कहते हैं। जैसे फॉल बैक ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं कि अगर वो सारे एसेंशियल्स जो पर्टिकुलर ऑफेंस को डिफाइन करने के लिए दिए गए हैं क्रिमिनल प्रोविजन में, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये चाहिए 1 2 3 4, और अगर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होता, सपोज 3 नहीं है, तो ऑर्डिनरीली बेसिक इंटेंट के केस में इंसान एक्विट हो जाएगा। स्पेसिफिक इंटेंट के केस में और फॉल बैक ऑफेंसेस के केस में, जो अभी मैं फॉल बैक केस बता रहा हूँ, फॉल बैक ऑफेंसेस है वो हैं कि ये अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो ये तब भी एक छोटा सा क्राइम हो जाएगा। अब मिसाल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर जो है अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, उसके 4 में से एक मेंस rea सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और अगर 4 में से एक मेंस rea सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये नहीं होगा दैट ही विल बी एक्सोनरेटेड, इट विल फॉल बैक ऑन culpable homicide not amounting to murder punishable under 304 पार्ट 1 या पार्ट 2। तो वो फॉल बैक ऑफेंसेस है। सिमिलरली इंग्लैंड या इंग्लिश लॉ में आप देखेंगे इफ अ पर्सन इज चार्ज्ड ऑफ मर्डर और मर्डर वो नहीं साबित हो पाया, तो जैसे यहाँ culpable homicide not amounting to murder है, फॉल बैक ऑफेंस मर्डर का मैनस्लॉटर है। तो मैनस्लॉटर या इन अदर वर्ड्स culpable homicide not amounting to murder is an offense of basic intent। बट ये सारा क्लासिफिकेशन इंग्लिश लॉ का है। इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज सच ए
डिस्टिंक्शन। अभी हम इंडियन लॉ से शुरू कर लेते हैं, एंड विद द नोट दैट क्यों philosophical फाउंडेशन क्या है इस चीज़ की। Look, there are certain things which you need to keep in mind, that alcohol actually, or those drugs which have alcoholic effect, they are capable of altering mood of a person, or they might change the perception of a person or consciousness, or it might loosen up the inhibitions of a person consuming, and he might lose self-control. So if that is voluntary, law पहले इसको एक aggravating factor माना जाता था, because a person is not expected by criminal law to deprive himself of ordinary cognitive faculties or reasoning or understanding, which might rise or give rise in him to the tendencies of resorting to criminality. तो ये एक बेसिक थ्रेड लाइन है that voluntary intoxication इसलिए ipso facto does not furnish a ground of defense. Involuntary intoxication definitely must be, but ये भी बजाते खुद involuntary intoxication exonerate नहीं करा पाता। इसको intoxication के बाद उसी footing या ground पे लाना पड़ता है। आप समझिए इस तरह, intoxication अगर है एंड इट इज़ इनवॉलंटरी, तो इसको उस फुटिंग पे लाना पड़ता है जिस पे इंसैनिटी है। मैंने ऐसा क्यों बताया, अभी हम प्रोविजंस में डिस्कस करके इसको समझेंगे। आईपीसी में पहले समझ लेते हैं हम। इंडियन पीनल कोड में आप जानते हैं देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, सेक्शन 85 एंड 86 रिगार्डिंग दिस, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टेक्स्ट बुक्स ने इनको समझाया हुआ है। आई मस्ट विद ऑल ह्यूमिलिटी से दैट टेक्स्ट बुक्स ने इसके साथ जस्टिस नहीं किया है अक्सर। इंटॉक्सिकेशन, आपको मैं यहाँ एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देयर इज़ अ प्रोविजन, और ये एमसीक्यू अपने पास याद रखिएगा, और कोई पूछ भी सकता है, किसी से पूछ लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे या मैं ही आपसे पूछना चाहूँ कि इंडियन पीनल कोड में लीस्ट पनिशमेंट कितनी है, सबसे कम, तो मुझे लगता है इम्प्रिजनमेंट की, फाइन के बाद, फाइन से ऊपर इम्प्रिजनमेंट है। 53 जो है ना सेक्शन चैप्टर 3 का, चैप्टर 3 ये पनिशमेंट से डील करता है। चैप्टर 3 रिलेट्स टू पनिशमेंट्स। ये सेक्शन 53 से लेकर 75 तक है। तो इसमें 53 पनिशमेंट्स जो है रिकग्नाइज करता है किस किस तरह की पनिशमेंट होंगी, 6। अब मैं सवाल मेरा ये था, सबसे कम पनिशमेंट कितनी मिलती है एक एक्यूज्ड को। तो बहरहाल जो लास्ट सेक्शन है आईपीसी का, इसका जवाब ये है 511, जो अटेम्प्ट को डिफाइन करता है। उससे जस्ट एक सेक्शन पहले आप आएंगे 510, उसमें देखेंगे क्या पनिशमेंट है। अगर एक ड्रंकन पर्सन शराब पी करके पब्लिक प्लेस में कुछ करता है डिस्टर्बेंस, तो उसकी पनिशमेंट होगी 24 आवर्स। तो सिर्फ 24 घंटे की पनिशमेंट आईपीसी देता है। इट्स अ फैक्ट जो अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं पढ़ने में इसको। बहरहाल, कमिंग बैक टू द इंटॉक्सिकेशन प्रोविजंस, सेक्शन 85 मैंने आपसे कहा था कि इंडियन लॉ ऑफ इंसैनिटी एंड इंटॉक्सिकेशन आर एट पार in the sense that they require presence of there must be a factor plus cause or result या effect। cause result या effect हो और factor हो। factor क्या हो? factor must be, for example 84 में अगर हम देखेंगे insanity में क्या है, insanity है obviously लिखा हुआ है unsoundness of mind, unsoundness, nothing is an offence which is done by a person who by reason of unsoundness of mind। और 85 में, 85 एक्चुअली बेसिक सेक्शन है, 85 और 86 में है इंसैनिटी, बट असल सेक्शन 85 ही है। 86 में क्या है, इसके साथ मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक्स ने जस्टिस नहीं किया है, अभी हम समझेंगे। 85 में जो फैक्टर है, कॉजल फैक्टर है, इट शुड बी इंटॉक्सिकेशन।
और अगर इफ दिस इज रेड विद प्रोविजो, अगर इसको हम प्रोविजो के साथ जोड़ दें, जो कि जोड़ना ज़रूरी है, इट इज़ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, नॉट वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। प्लस अब इफेक्ट में दोनों चीज़ें डिक्टो है, सेम है। क्या? सो इसके लिए मैं बेयर रीडिंग प्रोविजन की करता हूँ। नथिंग इज एन ऑफेंस 85 में which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. और similarly 84 में भी यही मिलेगा, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Incapable, incapacity किस चीज़ में? incapable of knowing the nature, is incapable of knowing the nature of the act or nature of the act, or that he is doing wrong or that he is doing wrong or contrary to law, contrary to law. ये एक ऐसा प्रोविजन है 85 जो 84 ही से कार्व आउट किया गया है एक स्पेसिफिक फॉर्म में, बिकॉज इंटॉक्सिकेशन जो इनवॉलंटरी हो इसको ट्रीट किया है एट पार विद इंसैनिटी। आप खुद वाज़ेह है इसमें। But there's a proviso. Proviso says that provided the thing which intoxicated him was administered to that person or without his knowledge or against his will. तो बेसिक प्रिंसिपल पूरी दुनिया में यही है, that involuntary intoxication. तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि that involuntary intoxication ipso facto does not furnish a ground of defense unless and until that intoxication was of such an effect. तो effect जरूरी है इसलिए प्लस करके जोड़ा है। mere intoxication, if for example a question is posed to you, A under influence of extreme intoxication commits the offense of theft. अब A किसके लिए गिल्टी है और मेंजरिया को लेकर के या इफेक्ट को लेकर के, जो इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट है उसको लेकर के साइलेंट है और वर्ड मिसलीडिंग डाला गया है A under involuntary intoxication. So he cannot succeed in his defense unless and until he brings that to the wisdom and knowledge of the court satisfactorily that he was incapable of knowing the nature of the act or that he was doing wrong or contrary to law. So ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कि intoxication plus the effect of intoxication जो उस पर हुआ हो, जैसे इंसैनिटी में इंसैनिटी का प्रेजेंस प्लस नेचर ऑफ दैट इंसैनिटी, उसकी वजह से उस इंसैनिटी का असर उस पर क्या हुआ होना चाहिए। नाउ हाँ 86 का एक्सप्लेनेशन रह गया, मैं 86 बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए आप अगर इफ़ वी रिमेंबर वन सेक्शन 39 विच डिफाइंस वॉलंटरीली, क्योंकि ये ही एक बेसिक डेफिनेशंस में बेसिक सेक्शन है, अपार्ट फ्रॉम फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, रीजन टू बिलीव। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोविजंस यही मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जैसे फ्रॉडुलेंटली है, फ्रॉडुलेंटली दिस इज इन 25, डिसऑनेस्टली दिस इज इन 24, इसी तरह रीजन टू बिलीव इज इन 26। तो वॉलंटरीली मेजर है जो मेंजरिया को लेकर के, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है और आगे बहुत यूज भी हुआ है। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली हु व्हेन ही कॉजेज बाय मींस whereby he intended to cause it intention or by means which at the time of employing those means he knew knowledge or had reason to believe. ये तीन मेंजरियाज के फ्रेजेस हैं या एक्सप्रेशंस हैं वॉलंटरीली को समझने के लिए, या फिर तो एक इंसान कब कहा जाएगा ही हैड द मेंसरिया व्हेन ही हैड इंटेंशन और नॉलेज और रीजन टू बिलीव टू डू इट सर्टेन थिंग। फिर वो उसको ऑफेंस पे जाना है कि उसके लिए क्या चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था। फॉर एग्जांपल मर्डर के केस में
अगर आप कल्पेबल होमिसाइड देखेंगे 299 में, तो इंटेंशन और नॉलेज दोनों में फंस जाता है, रीजन टू बिलीव का कोई जिक्र नहीं है। आप देखेंगे ही हैड इंटेंशन of causing death, or he had intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or knowledge that he is likely by such act to cause the death. ये reason to believe को लेकर नहीं है, बट कहीं कहीं reason to believe पे और knowledge पे पकड़ लिया है। तो intention तो obviously सबसे ऊपर है मेंजरिया के स्केल पे। तो दो मेंजरियाज की जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, intention और knowledge, इनको लेकर के एक presumption क्रिएट कर दिया सेक्शन 86 ने, इंटेंशन और नॉलेज। यस, इसीलिए सेक्शन 86 ये एक डीमिंग क्लॉज है, जो किसी चीज को तसव्वुर करके चल रहा है, मान के चल रहा है या प्रिज्यूम करके चल रहा है, और इसीलिए इस प्रोविजन को हम ये कह सकते हैं, दिस इज अ प्रोविजन विच इज इन द नेचर ऑफ एविडेंशियरी प्रिंसिपल और रूल, ये एविडेंस के नेचर का प्रोविजन है। इट सेज दैट इन दोज केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज। एक ऑफेंस में जहां रिक्वायर्ड है एक्स या फला इंटेंशन फला नॉलेज, या इंटेंशन लॉ कहता है ये इंटेंशन हो, या लॉ कहता है ये नॉलेज हो। जैसे कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या है, इंटेंशन क्या हो, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। या दूसरा 299 ही की मिसाल ले लेते हैं, 299 उसमें दो मेंजरियाज इंटेंशन से रिलेटेड है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इस पे पकड़ा जाएगा, और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ। तो अगर बॉडीली इंजरी, अगर इसको इंटेंशन ही नहीं था लेकिन जख्म ऐसा दिया कि उससे इंसान मरने का अंदेशा है, तो कहा जाएगा उसने कल्पेबल होमिसाइड किया, कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब अगर इंटेंशन भी नहीं है और वैसी इंजरी भी नहीं है दी, ऑर्डिनरली उस इंजरी से नहीं मरता इंसान जो दी, तो क्या उसको नॉलेज थी कि इसका रप्चर्ड स्प्लीन है, या उसका जो अंदर डिफेक्टिव पैनक्रियाज है, यहाँ मारने से मर जाएगा, तो दैट इज अ फैक्ट ऑफ नॉलेज। तो एक और तीसरा जो 299 में मेंजरिया है, तीन ही है, दैट इज नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, नॉलेज दैट he is likely by such act to cause death। अब देखिए, अब अप्लाई करते हैं 86 पे। अनलेस, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने ले ली, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। A person who does that act, अब अगर किसी ने एक्ट ये किया और फिर प्ली ले ली, इंटॉक्सिकेशन की, तो लॉ क्या कहता है, इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन a person who does that act in a state of intoxication shall be liable to be dealt in the same manner as if he had the same knowledge, in the manner that as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। इसको ले करके प्रिज्यूम कर दिया, एक प्रिजम्पशन कर दिया कि दैट लॉ शैल डील हिम इन द सेम मैनर इफ he had the same knowledge as if he would have had if he had not been intoxicated। इंटेंशन को लेकर के लॉ इतना हार्श नहीं हो सकता कि प्रिजम्पशन क्रिएट कर दे, तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए इंटेंशन तो हमेशा प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ इंटेंशन। पर नॉलेज को लेकर के लॉ ये कहता है, अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड इंसान इसकी प्ले ले लेता है कि मैं उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड था इसलिए ये ऑफेंस हो गया, तो लॉ उसको ऐसे डील करेगा दैट ही हैड द सेम नॉलेज एज इफ ही हैड if he were not intoxicated, provided a thing which intoxicated him, मगर इस शर्त पे कि वो चीज़ उसको यानी ये प्रिजम्पशन जो नॉलेज का क्रिएट कर दिया है, ये तब उसको दैट प्रोवाइडेड दैट unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will।
यहाँ ज़रूरी है कि ये जो presumption है इसको रिबटेबल बना दिया जाए, तो unless clause जो है रिबटेबल बना दे रहा है इसको. It's a rebuttable presumption which can be displaced by bringing on record that the thing was intoxicated to him without his knowledge or against his will. मिसाल के तौर पर, for example, एक इंसान को A है, उस पर चार्ज है थेफ्ट का, और B के घर से उसने कोई प्रॉपर्टी ले ली P, सपोज P ले लिया, P इज सम कमोडिटी, और सपोज इट्स अ कार को ड्राइव करता हुआ ले गया और अपने घर पहुंचाया, चार्ज ऑफ थेफ्ट. तो थेफ्ट के चार्ज में बी ने ये प्ली ले ली कि पी ने ही थॉट एट द टाइम दैट कि कार उसकी अपनी है, उसे नहीं पता था ये मेरी कार नहीं है. तो अब लॉ, इफ दैट पर्सन हैड अंडरगॉन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, देन दिस विल अप्लाई अगेंस्ट हिम. लॉ विल ट्रीट हिम एज इफ ही हैड नॉलेज, वही नॉलेज होती उसको जो उसको सैनिटी की हालत में होती, विदाउट इंटॉक्सिकेशन होती. मगर अगर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एंड ही ब्रिंग्स दैट ऑन रिकॉर्ड, तो इस नॉलेज के फैक्टर पर लॉ उसको छोड़ देगा. I think this is sufficient for this lecture for now, and in this next lecture we will try to understand this Indian law of intoxication through the case of Gallagher, this Basdev versus Pepsu याद होगा आपको, and some recent case laws also, क्योंकि अभी 3-4 सालों से इसमें बहुत jurisprudence नई आई है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. And then in next lecture हम कुछ आर वर्सेस सुलिवन, एक पुरानी जजमेंट भी आर वर्सेस सुलिवन कनाडा की, और रिसेंट जो है मजेस्की की जजमेंट, बियर्ड एंड गैलागर एंड अदर जजमेंट्स. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. हैव अ नाइस टाइम अहेड. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.